दोस्तों, good morning. It's a bright sun, and I'm going to talk of something very bright also. सबसे पहले मैं आपकी बात करने वाला हूं अबाउट द एक्लिप्स ऑफ यूरोप। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। जब आचार्य विनोबा भावे, द ग्रेट भूदन लीडर, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि ही मेट अ स्टूडेंट हु वाज डूइंग द 10th क्लास, दैट इज हाई स्कूल। तो उसने पूछा आगे क्या करोगे? एंड द स्टूडेंट सेड, जी मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं बीए करूंगा। वेरी गुड। स्टूडेंट जब बीए में था तो उन्होंने पूछा भी अब क्या करोगे आगे? उसने कहा सर मैं एमए करूंगा। वेरी गुड, दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब जब उसने एमए कंप्लीट कर लिया था तो आचार्य भावे ने उनसे पूछा कि अब क्या करोगे? तो उसके पास जवाब नहीं था। ये नो आंसर कि आगे मैं क्या करूंगा। यही प्रॉब्लम है यूरोप का कि अब यूरोप ऐसी सिचुएशन पहुंच गया है कि दे डोंट नो, दे डोंट हैव एन आंसर कि आगे हम क्या करेंगे आगे। ऑल द टाइम दे आर बैंकिंग ऑन अमेरिका। अमेरिका के ऊपर वो पिगी बैक राइड कर रहे थे, घोड़ों के ऊपर अपनी पावर दिखा रहे थे। अब जब अमेरिका ने घोड़ा खींच लिया, इनको पता नहीं अब करना क्या है। और इन्होंने सोचा अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया इन द यूनाइटेड नेशंस कंडेमिंग रशिया। तो उन्होंने कहा ये एक फेट कंप्लीट हो जाएगा, अमेरिका को किसी हालत रशिया को कंडेम करना पड़ेगा। बिकॉज हर बार जब ये रेजोल्यूशन आई है अमेरिका ने रशिया को कंडेम किया है। पर इस टाइम जो वेस्टर्न यूरोप था उसको एक मुक्की मिली, बिकॉज रशियंस खुश हो गए। अमेरिकन रिफ्यूज टू कंडेम रशिया, एंड जो रेजोल्यूशन थी उसको अमेरिका ने अपोज किया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। नेचुरली लॉट ऑफ बिविल्डरमेंट आ गया यूरोप में, वो घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया भाई? पर ये होना ही था, बिकॉज फॉर लॉन्ग यूरोप हैज बीन लाइक ए लीच ऑन अमेरिकन इकोनॉमी। उन्होंने बहुत सारी टैरिफ्स लगा दिए अमेरिका के ऊपर। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन देयर फेवर। अमेरिका के डिफेंस के ऊपर रिलाई कर रहे थे। एंड 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स इवन नाउ जर्मनी में है। एंड द वेस्टर्न यूरोपियंस वर नॉट नोइंग व्हाट इज सेल्फ डिफेंस। उन्होंने सोचा सिर्फ हमारी इकोनॉमी है, एंड दे वर ऑल द टाइम ऑल्सो एट नंबर ऑफ प्लेसेस अपोजिंग अमेरिका। इसराइल में भी अपोज करते थे, एंड लॉट ऑफ पीपल वर एंटी रशिया, एंड रशिया को खत्म करना चाहते थे। एंड चाइना के साथ दे वांटेड टू बी फ्रेंड्स, बिकॉज चाइना जो है बहुत दूर है उनसे। दे डिडंट रियलाइज that China is the main antagonist of America in the Pacific Ocean and South China Sea. और इनकी एक और भी प्रॉब्लम थी विच दे वांटेड टू कवर अप। इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इज लॉपसाइडेड। द बर्थ रेट हैज फॉलन टू क्लोज टू 1.1, और 2.1 इज द बर्थ रेट दैट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन ए पॉपुलेशन। और नेट रिजल्ट ये है कि यूरोप इज एजिंग, उनके पास यंग मैन नहीं है। एंड अगर वो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, पीपल आर नॉट अवेलेबल। ये एक फैक्ट बात है। जैसे इंग्लैंड की आर्मी 80,000 ओनली, और ये 80,000 की आर्मी क्या कर सकती है वर्ल्ड में? आप जानते हैं, देयर परफॉर्मेंस विल बी जीरो। और दो एयरक्राफ्ट कैरियर है मिड साइज, और सेम थिंग फ्रांस का है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दे कैनॉट एग्जर्ट एनीवेयर। और अमेरिका ने अब क्लियर कर दिया यूरोप को कि किसी भी हालत हम पीस यूक्रेन में लेके आएंगे। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप आर फॉलोइंग इन लाइन विद अमेरिका। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, आई थिंक इसके डेज नंबर्ड हैं, एंड ये अब ऑब्लिवियन में चले जाएंगे, यानी अंधेरे में चले जाएंगे। इनको कोई और चारा नहीं है इनके लिए, बिकॉज ही हैज हैड हिज डे। इसने काफी बेवकूफ बनाया पब्लिक को, एंड $500 मिलियन उसने अमेरिका से लिए हैं थैंक्स टू जो बाइडेन।
एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसने लिए हैं फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, और वेस्टर्न यूरोप में तो कुछ लोन दिए हैं, उनको वापस मिल जाएंगे, बट फुलिशली जो बाइडेन ने ग्रांट दे दी और वो नहीं वापस होंगी। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो लोन है, ये अमेरिकन ग्रांट्स है, ये आप वापस करिए, और मेरे ख्याल में जेलेंस्की ने इनकार कर दिया। सो ये बात जो थी होनी ही थी, बिकॉज कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आना था who would have sorted out the rights. See, America is a very rich country, but that doesn't mean कि आप लार्जेसी करते रहें, यानी करोड़ों रुपया डॉलर जो है ये बांटते रहें फ्री ऑफ चार्ज, बिकॉज अल्टीमेटली आप जानते हैं दी हिंदू गॉड ऑफ वेल्थ जो कुबेर था, उसके भी कॉफर्स खाली हो गए थे, यानी उसका भी पैसा खत्म हो गया था, और एक टाइम आएगा जब अमेरिका का भी पैसा खत्म हो जाएगा। इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया कि हम अब अमेरिका के बारे में सोचेंगे, नॉट अबाउट अदर कंट्रीज। एंड वेस्टर्न यूरोप जो है ये टोटली घबरा गए हैं, नॉट ओनली घबरा गए हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू। फ्रांस ने एक स्टेटमेंट दिया है, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, कि हम न्यूक्लियर शील्ड देंगे यूरोप को। आई थिंक ही इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, कि क्या न्यूक्लियर शील्ड फ्रांस देगा? कल को रशियंस एस्टोनिया या लेटिवा में आएंगे तो विल द फ्रेंच यूज देयर न्यूक्लियर शील्ड अगेंस्ट रशिया? अगर यूज करेंगे तो आप जानते हो क्या होगा, फ्रांस तबाह हो जाएगा, और जो छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं दे विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द फेस ऑफ द वर्ल्ड, और दे विल नॉट एक्सिस्ट ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन यूरोप। तो ये बकवास प्रेसिडेंट को, फ्रांस को नहीं करनी थी। इन एनी केस सिचुएशन इज फॉर फ्रांस वेरी ग्रिम, बिकॉज अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं, ही इज ए डिफरेंट मैन। और एक और प्रॉब्लम फ्रांस में चल रहा है, जर्मन चांसलर जो था होल्ड, ही हैज बीन डिफीटेड। ही वाज ए राइटिस्ट, ए लेफ्टिस्ट सॉरी, and he believed in so many things which the Germans don't believe, and now एक rightist party power में आ गई है, and this party's statement, the first statement of the chancellor is that we want to be independent of America. इसमें एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री में थ्रू आउट फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड की राइवलरी रही है, एंड फ्रांस ऑलवेज डिफीटेड था, राइट फ्रॉम 1870 जब बिस्मार्क ने पेरिस कैप्चर कर लिया था, एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में a lot of area of France was captured by the Germans, and then in the Second World War the French were knocked out in 40 days. So इनकी rivalry जो जर्मनी की थी was with England always, and that rivalry is going to continue now. That is the point. So हमें ये देखना है कि what is going to happen next. Germany wants to dominate Europe, that is the crux of the issue, but they don't have the military might, because इतने साल उन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट ही नहीं की, एंड दे वर सिटिंग ऑन देयर हॉन्चेस थिंकिंग अमेरिका विल डिफेंड अस, और अब वो बात खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में नेटो इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, बिकॉज नेटो विदाउट अमेरिका इज नो नेटो एट ऑल, इट इज लाइक ए टाइगर विदाउट टीथ। तो ऐसे एक टाइगर घूमता रहे जिसके टीथ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, ही कांट डू एनीथिंग। एंड इंग्लैंड ऑफ कोर्स, अभी उन्होंने कहा था कि हम 20,000 ट्रूप्स यूक्रेन में भेजेंगे। मेरे ख्याल ये तो हंसने वाली बात है, 20,000 ट्रूप्स अगर भेज भी दिए उनसे कोई असर नहीं पड़ेगा कैंपेन, बिकॉज रशियंस आर नाउ विनिंग, एंड दे आर हैविंग ए detente with the Russians, with the Americans, or there is a chemistry between Russia and America. डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत लंबा प्लान है जो मैं समझ पाया हूं। He wants to get the alliance of Russia, and he is going to use Russia against China, because he has realized that उनकी एनिमी एक ही है, दैट इज चाइना। इसी कारण वो इंडिया को भी मॉलिकॉटल कर रहे हैं, एंड ड्यूरिंग द लास्ट विजिट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेपन्स हम इंडिया को देंगे,
and trade balance will be set right, or among the weapons to be supplied is that formidable F-35 Generation 5 fighter. China worried hai, but that's about all. There is no choice. So, gentlemen, as far as Ukraine war is concerned, peace तो आना ही है वहाँ, and I think they have agreed for a ceasefire, which will take place in a week or two, and कुछ और concessions रशिया को दिए जाएंगे, and Zelensky जो है इसको भागना पड़ेगा वहां से. That is one, and Zelensky will not be part of the deal. That is a peace deal between America and Russia. And Europe itself will not be a part of this peace deal. The French president went all the way to meet Trump, and despite his meeting, America voted against the resolution condemning Russia as an aggressor. इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आप जाने वाले हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया कि मुझे नहीं पता व्हाई ही इज कमिंग हियर. You see, these people were thinking, and we will go and put pressure on America and tell them, look, we've been allies for 100 years, so join us again against Russia. You see, the whole situation is absolutely topsy-turvy. Russia is a European power, and Russia cannot be defeated unless America goes whole hog in the war against Russia. Or अब America is not going to go into the war against Russia. There is going to be peace in Ukraine, because Donald Trump ने एक बात clear की when he was not the president, that I will bring about peace in Ukraine, number one. Number two, I will ensure that Gaza also has peace. गाजा में उन्होंने बहुत अच्छी proposals दी हैं, which I have already discussed in a separate video. And in Ukraine, it is very clear that peace is on the anvil. And the Western power, that is France, Germany and England, इनकी हिस्ट्री खत्म हो गई है. That is one thing is clear. You see, French and the British thinking that we are big powers and हम अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे and we will appeal कि हम जी allies थे आपके 100 साल के लिए and हम आपके साथ रहेंगे, please join us in the battle against Russia. ये बात नहीं होने वाली. And these countries have no strength to fight Russia. They are such small armies that they will be defeated within no minutes, rather within few minutes. And how many soldiers can really England commit for battle in Ukraine? उनकी 1-2 हजार casualties हो गई. It will be almost 15% of their army being written off. And to talk of nuclear shield which France has done, इसका कोई मायने नहीं. It's a foolish talk, because nuclear shield means use the nuclear weapons against Russia, and if they do that, they will be citing the death knell of countries like Belgium, Holland, Denmark. ये तो will cease to exist. But there are so many countries in Europe which don't agree with the British about sending troops to Ukraine, like Germany and Poland, Hungary. And now we must be very clear that the world has changed. Very clear that the world has changed. वो जो पुराना वर्ल्ड था वो खत्म हो रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रूमन छोड़ के गए थे with the Marshall Plan and all that. And successive American presidents, they followed that. Eisenhower, everybody. And Clinton जो है ना, Bill Clinton जो थे, he is the man to have taken the Western powers down an abyss of no return. और फिर ओबामा थे, and Biden was not in his senses in any case, and Donald Trump has come with revolutionary ideas. They are revolutionary, ये तो मानना पड़ेगा. ऐसे कोई आइडियाज नहीं है जो कोई प्रेसिडेंट लेके आ सकता है. एंड मेरी जो थिंकिंग है, he wants to bring about peace in Ukraine, number one. Number two, he will incorporate Russia as an ally against China, break the Russian-China axis. Number three, he is going to mollycoddle India into opposing China, whether Modi
Plays ball or no is a different issue, and he is going to finish the Western powers who have always opposed him. That is number one. And NATO, I think he's already said, is a obsolete organization and it is going to be finished. So ये सब बातें हैं. These are momentous decisions in this century, and मेरे ख्याल में Donald Trump will go down in history as the greatest American president. ये तो कोई बात. एंड डेफिनेटली अगर वो लड़ाई बंद कर देते हैं यूक्रेन में और गाजा में, ही डिजर्व द नोबेल पीस प्राइज, और शायद उनको मिल भी जाएगा. और एक बात याद रखिए, ही इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसने लड़ाइयां बंद की हैं एंड फिनिश की है लड़ाई. ही डिड नॉट फाइट द वॉर्स. दैट क्रेडिट शुड गो टू हिम. Every American president has started wars, but Donald Trump has finished wars. And there is a lot of opposition to Donald Trump in America also. मैं जानता हूं, बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि ये आदमी आया है कहीं से और ये क्या कर रहा है. बट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज गुड फॉर द वर्ल्ड. और अब वक्त आ गया है कि जैसे आचार्य भावे वो स्टूडेंट को मिले थे एंड ही डिडंट नो व्हाट इज टू डू नेक्स्ट. यूरोप आल्सो, particularly the three powers, Germany, France and England, don't know what to do next. They will have to reconcile to a subservient status commensurate with their size. Let us be very clear that France, England and Germany, compared to the big powers like Russia, China, India, are very small countries, tiny countries. And they were having an influence much greater than their size over the world. That will be finished. Well, they have lost their empires on which they were riding piggy bank, and now they must face the reality. And the reality is that in France and England, there is a massive Muslim minority, and that is going to eat into their vitals. And mark my words, they will be the cog, one of the cogs in the wheel of fortune which will break France and England. And just going around shouting that we were Great Britain of France and we had such a big empire and all that is a lot of BS. Donald Trump has brought in revolutionary ideas and we must support him and his peace effort in Ukraine. एक बात तो बहुत क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आए हैं, और ये जो फ्रेंच एंड अंग्रेज हैं इनको समझ नहीं आता ये आइडियाज कैसे आ गए हैं. वो तो सोच रहे थे कि वेल ऑलवेज द अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे साथ रहा है और जय हिंद करता रहता है हमारे साथ, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन नाउ. Gentlemen, I think I'll close now. I hope you like this video. Share it with your friends and like and subscribe. And I look forward to more interaction with you. In the mean, I will say goodbye, God bless, and Jai Hind.